So let's start, Abhishek. Okay. हाँ जी अभिषेक सो अपने एक brief introduction दीजिए please to begin with. So my name is Abhishek. I come from a village called Bilaspur Khurd in Gurugram district of Haryana. Sir, I did my schooling from nearby village itself. Sir, then I did my graduation from University of Delhi. Sir, after graduation, I started preparing for civil services. Sir, in HCS, it is my first attempt. Right. So Abhishek, you graduated in what? Sir, I did BA program. BA? BA program, sir. BA programming. Yes, sir. And what are your hobbies, Abhishek? Sir, my hobbies include playing and watching cricket. Sir, apart from that, I occasionally listen to music and like to spend time with my friends. So Abhishek, can you tell me a bit about BA programming? Sir, it is a course, a BA program it is. Sir, there is no specialization in the program. We are offered various subjects. So I opted for political science and history as the main subjects. And sir, other subjects include English, Hindi, and these are the subjects, sir. So you said you graduated from University of Delhi. So when did Yes, you sir. Sorry, sir, I could not hear you. When did you graduate? Sir, 2018. And after that, what you have been doing? Sir, I started preparing for civil services, and sir, since then I'm in the process. What was your optional in civil services and in HCS? Sir, my optional is PSIR, same in HCS and UPSC. PSIR, right. So, Abhishek, can you tell me about the Middle Kingdom syndrome? Middle Kingdom syndrome, China. Yes, sir. So China, we refer China as Middle Kingdom. So because it has a self image of a Middle Kingdom, whereby it sees itself as a superior country, and other countries they are less civilized, and they are to be dominated by China. So it is a Middle Kingdom placed between God and other countries. And what is wolf warrior diplomacy? So wolf warrior diplomacy is a very aggressive diplomacy. It has been associated with the diplomacy that is being carried out by Chinese diplomats. So they are very aggressive. They pressurize other countries. So they engage in some word of wars with other countries. So this is wolf warrior diplomacy. So right. So Abhishek, you belong from which district of Haryana? Sir, Gurugram. Gurugram. So Abhishek, why Gurugram has developed much more compared to any other city in the or any other district in the vicinity of NCR, be it Bahadurgarh, etc. So what is special in Gurugram? Uh, so yes, we have seen that Gurugram has witnessed a very rapid development. So first of all, it is in the proximity of Delhi. So secondly, it is in proximity to IGI, that is international airports. So second, the lot of investment has started coming in Gurugram district, starting with Maruti and automobile industries. And so now we have seen a boom in IT industries. There are more than 400 IT industries working in Gurugram. So, sir, I feel these are the reasons why Gurugram Abhishek, along with a lot of development that we have seen in Gurugram, there also has been an increasing rate of crime in Gurugram and nearby areas. What could be the possible reasons for that? And as a civil servant, what should be done to improve the situation of that city? Yes, sir. So, first of all, why the crime has developed more in Gurugram and in other Haryana state, in other areas, sir, because of lot of migration has happened in Gurugram, and we have a very porous border. So that gives criminals an easy opportunity to move in other states to escape the jurisdiction of the police. So secondly, we have seen because of changing of value system that has taken place, so which has increased the crime culture. So thirdly, lot of unemployment is witnessed in Haryana. So Haryana has the largest unemployment in entire India. So that has drawn the youth towards coming into contact with law non-abiders. So you said about value system. Can you elaborate a bit about value system? First, tell me what is value and which kind of value system you're talking about. So value something which we hold very dear to us. For example, somebody has truthfulness, honesty. These are the values that are in our society. So communitarian value is also one of them.
Sir, I'm talking particularly about the value system because earlier we used to uh, have a very follow the elders very briefly. Sorry, sir. So, so elders used to have a very high say in our day-to-day life. So now we are seeing that this social checks and balances has gone down. So we are practicing a lot of individualism and lot of materialistic culture. And sir, apart from that, on social media, hate crimes and all these have also propped up. So these in my opinion have led to degradation of value system and resultant in increasing of crime. So, Abhishek, you said that checks of elders are social checks and balances. Yes, sir. So, don't you think that the social checks and balances are antithetical to the idea of personal liberty? Uh, so to an extent, I agree with your statement. They are antithetical to individual liberty, but sir, but apart from that, so we as an individual has to live in the society. So there are social morals and checks and balances which has to be there. One has to follow them. So law is one such a thing. To respect towards elders, respect towards women. So these all needs to be followed, and these cannot be set aside in the garb of personal liberty. So, that means that societal values should always overrule the individual liberties. Sir, not I did not mean to say that. So, if there are certain social values which are not good, so we need to change that, and so they needs to be in harmony. Social values and individual liberty should be in harmony with each other. Right. Yes. So, can you tell me a bit about that? Why in India there is so much of inflation? So much of inflation. Right. Yeah. So because in entire world that we are seeing inflation, the rise of inflation in almost every country in Europe, in USA, in every country. So but it is because of the COVID-19. So government had to push and pump in more money. So increasing the money supply has led to uh, more inflation in the economy. Right. So you must have read newspaper today. So it must you must have read that in Pakistan has increased the value of or the price of petrol and diesel. So Yes, sir. can you tell me how this petrol and diesel price functions overall in the market in the world, and how we decide in India the value of petrol or diesel? Sir, the value of petrol and diesel largely depends on the demand and supply. So there are many countries like in West Asia, Russia, they supply oil and they have formed a OPEC, that is Organization of Petroleum Producing Countries. So and OPEC Plus is also one. So they decide what amount of oil they are producing and how much they are going to sell it in the market. So it is that demand and supply which dictates the prices. So in India, we follow liberal rates of the petrol and diesel, whereby market decides the rate. Right. So, Abhishek, can you tell me a bit about your family background? Yes, sir. So my family includes my brother, my mom and dad, my grandparents. So we have a farming background. And apart from that, sir, my father also owns a small shopkeeper. Is a small shopkeeper. So, Abhishek, with the entry of the big businesses like Walmart, DMart, now Reliance is also coming with the brand name of Independence. So, what impact the small shopkeepers have on their business? Sir, because of lot of these big companies are entering into the market, and we are seeing a lot of delivery to the doorstep. So it is seen that these may threaten the small businesses in India, especially the retail shopkeepers. Sir, but I believe, sir, if there is a kind of bond that shopkeepers owns and with the people living in the vicinity. So for day-to-day needs for these kind of things, I think the small shopkeepers will continue to be in the market. Apart from that, sir, the large shopkeepers, the wholesalers will get impacted by these. So, you said that your hobby is cricket and music. So, which kind of music you Yes, listen? sir. Sir, Punjabi music, Bollywood music, Hindi music, these are the Punjabi kind of. music. So, what is your opinion about the gun culture in Punjabi music?
Uh, Sir, it is very unfortunate that the music industry as is promoting the gun culture, sir. But I believe, sir, it is in the Article 19. So the freedom of expression. So they can develop any kind of music they want. But I believe, sir, with persuasive approach and by talking to them, so we can denounce these kind of gun culture in the music industry. Abhishek, do you know about a particular step which was taken in this direction by the government of Punjab? Sorry, sir, I'm not aware of. So Abhishek, your other hobby is cricket. Yes, sir. So yesterday the Indian women's team won the under-19 cricket World Cup, right? Yes, sir. So what is your opinion about the pay gap still that prevails between the women cricketers and the male cricketers in India? Yes, sir. Sir, BCCI has taken a step that the annual salary will be same for men and women. So that is a very progressive step. Uh, so, sir, I feel the gap is in the marketing, the kind of revenue that the man cricket generates and the female cricket has not been able to develop that kind of revenue. So, sir, other earnings depends the gap between the man and female cricketers. Is IPL destroying Indian cricket? No, sir, I don't think so. IPL is destroying, but it is promoting the Indian cricket. So it is attracting the best talents. We have seen that a lot of cricketers from IPL have gone into the international cricket are performing quite well. आप क्या खेलते हो क्रिकेट में? कौन सी पोजीशन पे खेलते हो? Sir, बैट्समैन हो, बॉलर हो, या हर इंडियन क्रिकेट ऑलराउंडर हो? Sir, all-rounder. ऑलराउंडर हो. स्पिन कराते Yes. हो फास्ट? Sir, fast. फास्ट कराते हो. राइट आर्म लेफ्ट? Sir, right arm. तो ब्लॉक होल क्या होता है? Sir, block hole. Sir, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, it is the Yorker, right in the shoes. तो अगर आपने यॉर्कर करानी हो तो आप किस लेंथ पे बॉल आपकी बाउंस करे, टप्पा किस लेंथ पे पड़ना चाहिए अगर आपने यॉर्कर करानी है तो? सर, इट इज जहां पे बैट्समैन अपना बैट रखता है, राइट लेंथ देयर. बताओ ना मुझे, लेंथ बताओ. पिच कितने यार्ड्स की होती है, किस एरिया पे किस यार्ड पे आपकी बॉल का टप्पा पड़ना चाहिए अगर आप बॉल ब्लॉक होल में करवाना चाहते हो? सर, पिच की लेंथ 22 यार्ड्स होती है. सो और बैट्समैन आई थिंक 2 यार्ड्स आगे होता है, तो 20 यार्ड्स पे. क्रीज I think, कितनी होती है? क्या सर? क्रीज क्रीज और स्टंप के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता इस बारे में. सर अभिषेक, आपने बात करी हरियाणा के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे के ऊपर, Yes. ना? यस सर. अनएम्प्लॉयमेंट इतनी दुनिया को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है गुरुग्राम से, तो आपके हिसाब से हरियाणा के बच्चे क्यों नहीं एम्प्लॉयमेंट ले पा रहे गुरुग्राम में, बट बाकी पूरे इंडिया से उठकर लोग गुरुग्राम में जॉब कर रहे हैं? व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर, पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट अराउंड 30% है हरियाणा में. सर, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. सबसे पहले तो सर, हरियाणा एक कमर्शियल हब है, गुड़गांव स्पेशली. सो ये बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है बाहर से, अदर स्टेट से, यूपी, पंजाब, राजस्थान और बाहर स्टेट से. सो जिससे एम्प्लॉयमेंट का कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है. तो उस वजह से हरियाणा और लेबर उसके एम्प्लॉयमेंट में कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों को थोड़ा कम एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है. सर, सेकेंडली, हरियाणा में सर उस लेवल की स्किल और एजुकेशन है, पर उस लेवल की नहीं है कि जिससे उनको इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट मिल सके, जिसकी वजह से बेस्ट टैलेंट जो कंट्री का है वो आके एम्प्लॉयमेंट ले जाता है. तो और सर, थर्डली, द कोविड-19 रिकवरी सर वो उतनी फास्ट नहीं हो पाई है जितनी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उसकी वजह से भी जॉब लॉसेस हो रही है. ठीक है अभिषेक, थैंक यू. तो फीडबैक ले लेते हैं थोड़ा सा सर. यस सर. अभिषेक, सी टू बी वेरी फ्रैंक, अभी बेसिक्स में मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रही. आपकी कम्युनिकेशन इज गुड, राइट? आपने आंसर्स भी बहुत अच्छे से दिए. जब आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए तो आपने तीनों के ही 1 बाय 1 आंसर दिए, तो दैट इज समथिंग दैट आई लाइक. ये सारे एस्पेक्ट्स आपने A to Z कवर किए. यस सर. इसके अलावा जैसे थोड़ा बहुत क्रिकेट को लेकर आपकी हॉबी है, तो जो सर ने क्वेश्चन पूछा ब्लॉक होल वाला, ऐसे इससे और ज्यादा आप टफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रिकेट के बारे में. तो थोड़ा सा इन चीजों के बारे में थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाओ ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. 22 यार्ड की पिच होती है, ठीक है, 1.5 यार्ड की आपकी क्रीज होगी. बैट्समैन क्या करता है? बैट्समैन अगर आप फास्ट बॉलिंग, कैसे मैं फास्ट बॉलिंग करा दूं तो बैट्समैन क्रीज के बाहर करता है, तो 18 यार्ड बैट्समैन आ गया. तो अगर मैंने ब्लॉकर पे कराना तो मैं उसको 17 या 18 यार्ड में बॉल कराऊंगा, 18 यार्ड में बॉल कराऊंगा तो उसके पैर में बॉल बजेगी. ठीक है, तो थोड़ा सा Yes, sir. टाइम लेके लॉजिक लगा लो उसमें. हाँ. ओके सर.
और इसके अलावा ऐसा मुझे भी बहुत बड़ा कंसर्न नहीं ऐसा कुछ दिखा। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, PSIR ऑप्शनल है, उसके रिगार्डिंग से अपने जो क्वेश्चन पूछे वैसे तो यू आर एबल टू आंसर दोस, तो एज सच दैट इज आल्सो प्रिपेयर्ड। गुरुग्राम के ऊपर सवाल जरूर आएंगे। गुरुग्राम के ऊपर डेवलपमेंट जो एक इनअप्रोप्रिएट या आप कह सकते हो कि गुड़गांव अलग है और पूरा हरियाणा अलग है, उसके ऊपर सवाल आ सकते हैं आपको, उसके बारे में प्रिपेयर करके जैसे जाना। मैंने आपसे ना इसमें क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा में गुरुग्राम डेवलप हुआ, व्हाई नॉट अदर डिस्ट्रिक्ट्स इन द विसिनिटी ऑफ हरियाणा, वो आपने सवाल मिस कर दिया। वो मिस हुआ। ठीक है, जैसे मैंने स्पेसिफिकली रेफरेंस दिया था Yes, sir. कि बहादुरगढ़, तो वो क्वेश्चन जो था वो मिस हो गया। तो ये देख लेना। दूसरा Yes, आपने sir. इंट्रोडक्शन दिया, आपने इंट्रोडक्शन बहुत छोटी दी अपनी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया कि मैं ये पढ़ा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, मैं यूपीएससी तैयारी कर रहा था, दैट इज इट। तो आपने इसमें बताओ कि मेरे सर फैमिली Mm-hmm. बैकग्राउंड, माय फादर इज अ फार्मर। ठीक है, माय आपके मदर हाउसवाइफ हैं, क्या Mm-hmm. जॉब करते हैं? हाउस मेकर है, होम मेकर। Yes, sir. House हाँ worker. ना, तो आप बोलो कि माय मदर इज अ होम मेकर, माय आई हैव अ एल्डर सिबलिंग और यंगर सिबलिंग, जो भी है, ब्रदर, राइट? एंड देन यू टेल इन योर हॉबीज की सर आई इन माय फ्री टाइम whenever I get time, so I play cricket and I play and watch cricket, and I also like to listen to music। तो यहाँ से आपके सवाल निकल सकते हैं म्यूजिक के ऊपर, क्लासिकल म्यूजिक और नॉर्मल म्यूजिक है कि क्लासिकल म्यूजिक क्यों डिक्लाइन कर रहा है, एक ये सवाल निकल सकता है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा देख लेना। दूसरा, PSIR में जो करंट इश्यूज है वो तो आपको पता ही है, टर्की वगैरह वाला इशू पढ़ लेना, नाटो का इशू जरूर पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, नेटो का इशू पढ़ लेना, टर्की का Yes, इशू sir. पढ़ लेना। रिसेंटली आप ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें राइटिस्ट आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि स्वीडन में होली कुरान को जला दिया गया। ठीक है, आपने देखा था न्यूज़पेपर में। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपके नेट में इशू आ रहा है, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? हाँ अभी आ रही है सर। हाँ, तो हाँ जी, आपके हाँ नेट जी। में थोड़ा इशू, आपका लो बैंडविड्थ का नेट है, दिखा भी रहा है जूम। तो आप ना ये देखना कि थोड़ा सा राइट विंग की राइज हो रहा है यूरोप में, उसको देख हम्म। लेना। ठीक है। दूसरा, आपसे सवाल जब पूछा वैल्यू वाला, तो वैल्यू वाले सवाल का पूरी ठीक से आंसर नहीं कर पाए। ठीक है, उसको देख लेना कि वैल्यू होते क्या है, ये सारी बातों का जवाब देख लेना। उसके बाद पेट्रोल प्राइसेस वाला क्वेश्चन आप ठीक से जवाब नहीं दे पाए कि इंडिया में पेट्रोल प्राइसेस कैसे रेगुलेट किए जाते हैं, तो आपने बोला लिबरलाइज्ड है। ठीक है, वो देख लेना कि पेट्रोल प्राइसेस कैसे रेगुलेट होते हैं, OECD क्या है, ये सारी चीजें जरूर देख लेना। फिर आपसे जब गन कल्चर का सवाल पूछा गया, तो आपने गन कल्चर के सवाल में बोल दिया कि सर आर्टिकल 19 के अंतर्गत जिसने जो करना कर सकते हो, पर आर्टिकल 19 डिसेंसी, मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर जैसी चीजों की बात भी करता है। ठीक है, तो आप इन चीजों को भी रिफ्लेक्ट करोगे। सर होता है कि एक क्रिएटिव फ्रीडम होता है, पर उस क्रिएटिव फ्रीडम के साथ साथ ये रिस्ट्रिक्शंस भी जो है एसोसिएटेड होती हैं, तो हमें इन चीजों को ध्यान में रख के भी काम करने की जरूरत होती है। ठीक है, साथ में अब एग्जांपल दें, जो सर ने सवाल पूछा था कि पंजाब ने क्या करा, आप इस चीज के ऊपर रेफरेंस दे सकते हो कि पंजाब ने ये लॉज लेके आए हैं, तो उसको देख लेना एक बार। तीसरा, हरियाणा के रिलेटेड आपकी थोड़ी सी नॉलेज, अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन था, या फिर एक और जो 2-3 सवाल पूछे हरियाणा के, वो थोड़े से वीक थे, तो हरियाणा के बारे में जरूर पढ़ लो। तो यूपीएससी दिया था इस बार आपने, यस सर। तो उसमें आपका क्या बना इस बार? सर इस बार मेंस नहीं हुआ उसमें। मेंस नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, अगली बार से इसको इसमें लग जाओ, फिर देते रहना। ठीक है। हम्म। ठीक है अभिषेक, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? यही सर, मैं थोड़ा नर्वसनेस था सर, वो दिखी फेस पे या कैसे? पहले 2-3 क्वेश्चंस में दिखे थे, हाँ, बस उसके बाद उसके बाद आप ठीक हो गए थे। अगर मैं पहले PSIR के अलावा, PSIR में अगर आपका स्ट्रॉन्ग, आपने बैचलर्स भी किया, आपका ऑप्शनल भी वही था, तो अगर बाई हम्म। चांस में PSIR के अलावा कोई और सवाल पूछ लेते, इकोनॉमिक्स का सवाल पूछ लेते, तो आप फंस जाते। हम्म। ठीक है, तो वो तो मैंने PSIR का सवाल पूछ लिया, इकोनॉमिक्स का सवाल फंस जाते आप, एथिक्स का सवाल आता फंस जाते आप। तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आप इमीडिएटली काम कर लो थोड़ा सा। ठीक है सर। राइट, थैंक यू अभिषेक, ऑल द बेस्ट। all the very best. थैंक यू सर। थैंक यू।